Hello and welcome all. Officially start कर रहे कॉल. सबसे पहले तो अगर शेयर करूँगा कि फूड मेरा फेवरेट टॉपिक है और एक साइड भी सिर्फ टॉपिक नहीं, खाना भी उतना ही पसंद है जितना टॉपिक फेवरेट है. और दूसरा तो मतलब मैक्सिमम जितना भी देखता ये फुट पे मैक्सिमम फोकस रहता है. इसका रीजन ये कि जितने भी जनों से मिलता हूँ ज्यादातर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, चाहे मोटे हैं चाहे पतले हैं, ये जैसे भी है, हर किसी का वेट फुड के अराउंड बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं कि ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए. किसी के लिए हेल्थ के किसी किसको हेल्थ के अराउंड होता है, किसी को वेट के अराउंड होता है, किसी को डिसीज के अराउंड होता है. हेलो अनीता. किसी को किस टाइम पे खाना चाहिए टाइम के अराउंड होता है, किसी को एज के अराउंड होता है, किसी को ग्लो के अराउंड होता है. मतलब बहुत सारी चीजें, जंक फूड, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड है. तो आप में से अगर शेयर करना चाहें या क्या, आई डिडंट अंडरस्टैंड हिंदी. ओके, या यू लेट मी शेयर दैट इन इंग्लिश. थैंक यू फॉर letting me know. I was telling that food is one of my most favorite topic, and I love eating food. The I enjoy the most is food, and being the foodie person, wherever I go or whomsoever I be, most of them, I can say 90 to 95% of the people have point of views around food. Even whether they are fat, whether they are thin, it doesn't matter. But either they have point of views around weight, around healthy food, around hygienic food, organic food, oily, too oil, or oily food. They have it affects skin, junk food. So in a way, they don't enjoy food, or they all have the limitation around that thing. Most of them, what I had observed, not all the points or all the things everyone has, but some has something, some has some the other thing in that way. Some have, many of them are also point of views around time. Okay, they should eat in a particular time, but on particular time and number of times too. Okay, how many number of times they eat. That is. So it will be better if it is going to be an interaction call too. If anyone has the questions or like to share or ask anything, yeah, all are most welcome. And if I ask you, okay, what are your point of views, or what are your point of views around food? So who would like to share first thing? First, you can unmute and connect. How much do you love food? Is there any? Hello, Kavita. Hi. Hey, you muted. Um, Yeah. can I talk? Yeah, please. Earlier you were muted, so that's why I was waiting. So I have this point of view since since past 6 7 years that whenever I am stressed out, whenever I have some tensions going around or something, so I eat more food and that is when I put on more weight. Or yeah, or because it is in the family, I'm not supposed to, meaning most of my family members are little healthy on the healthier side. So aisa hai कि you don't eat more food, otherwise you will also turn out to be more healthy, which I am already, but that is the point of view. Yeah. Yeah. Okay. And as you said, कि when you Yogini read your comment, just coming to that point after, and thank you for that question. Yeah, Bhavita, as you were sharing, कि when you are stressed out, you eat more, or you that is the time when you gain weight. So do you Yeah. think it has to do with food, or it has to do with stress? Just with being present in this moment, what is Yeah. it?
Because normally also you eat when you're not stressed. So do you think I don't like when others cook food? How interesting point of view on energy. Yeah, we'll come to that too. Keep writing the chats, whatever comes to, when we will address one by one at a time. Yeah. So do you think food has to do? Because as you said, you eat normally Yeah, too. maybe that is because more It of is, stress it happens. yeah. Yeah. Yeah, yeah, that is absolutely fine, Yogi. Mhm. And do you think, as you have said, your family is on the healthier side? Just a minute, let me admit. Yeah, as you said, your family is on the healthier side. Is it because only of food? Do they eat a lot more than normal, or they think they eat a lot? They What do you think, think? yes, they do think. I've seen people eating more food than what we do. Yeah, But या वो माइंडसेट होता है ना, शायद ये हेल्दी है तो ये ज्यादा खाते होंगे, yeah, वैसा। yeah. तो या Mhm. So can you connect with that thing? Can you get that? It's not about food. Just at least at this level, at this point of time, though it is deep engraved since childhood when we are born. Even our parents had bought that, and they keep on repeating. We had heard thousands of times, or might be more than that too. Okay, या eat in limits, or food will, well, you will gain weight. You have to be careful about what you are eating. It should be like that. Whatever the things is. Uh, Yeah, I think I can connect in that manner that yeah, it is not only the food that yeah, is causing the weight gain or causing a kind of body that you don't really want or whatever. uh, Uh, yeah, because more it, you know how it happens when you are happy and you are eating food, I don't feel that I am going to put on that weight. But when that stress level builds up, yeah, I totally. already know that I am going to put on weight now, and that is what happens. Yes, because what creates or what gains weight is exactly, well, it's our insecurity or fear, or that we are not able to digest, whether it's situations, whether it's food, whether it's things happening around us. So in short, whenever we are insecure about it, whenever we wanted to be protected or feel weak enough, that we are not good enough to face that situation, or that we start gaining weight. Right, Because as we train our minds in childhood, to be stronger, to have strength means to have a bigger body. right. It's since childhood, not at this time. I have Yes, when I'm stressed and fearful. That okay, God, okay. So what happened since childhood? We are aware. We know that it doesn't have to be too big. Even today, also, if you see someone is huge or someone had a big muscles, we suddenly we feel weak around them, or we think we can't fight or we can't face them if we go into the fight. So somewhere, or at many points, with many points, or we have associated it in a way. Okay, if we have to be strong or to fight someone or to be in that situation, we require more strength. And if we will have bigger body, we will be more strengthened. We will be more powerful. right, And at the same time, when we have more than normal weight, if we think we have more than, we also feel as a weakness too. Okay, it will lead to diseases, and that not right now, but as we grow older, so it is going to harm us in a way or other. We get this type of pain, we get that thing, we get this thing. yes. Digestion But then won't how do be. you deal with it? Like, We deal with it just matlab, as showing a few matlab, rest to it is in the class we are starting the series, so we will go deeper to each point of view from where it is coming. As I showed you, it is not about the foot, and as you're saying, but how many point of view, how many places we have bought that as true. So we attach that, associate that with love. We take that emotions and link it with love. Okay, as our parents are saying, no, you can't have it. It is from the care.
because they are not wrong. They don't want to harm us, and they are more experienced. Somewhere we take it as that. Okay? If they Okay. are saying that, it means it is the truth. Hello, Kapil, Malini, and Smita, Pinky, welcome all. Thank you for joining. And what we do is we go to the core of each and every point of view. Whatever is creating weight, whatever is making us insecure. Even when we have a point of view around food, it will help us, it will lead to gain weight. We Yeah. start fearing from that too. And that fear increases the weight gain, hold on to the weight or to the fat or the cholesterol. Because our body, from the needle to the point we die, to the death, we are the creators of everything. And I said कि nothing happens to us. All the diseases, all the pains, or the body structure, Yeah. body weight, whether it's too thin, also how we take it with our insecurities, whether you have to gain weight or lose weight. It is our body shows exactly how we are perceiving things, taking things, holding our emotions in a certain way. So when we work on that, we get over it. It is completely, it will be completely resolved, and your body will start dissipating and being in a natural form. Okay. Thank you so much. My pleasure. Thank you. I am into this since last 15 years, but earlier I used to do only personal sessions, one-to-one sessions. So this is the second series I had started group. I uh, couldn't figure out how. Earlier I used to think it's not possible. It is possible only on one-to-one basis, one-to-one sessions only. But when I started the last series in the Across group, this, it is, yes, yeah, sorry. I came across your messages today only. I've Okay. never been a part of Aradhana Tiwari's, groups and all. Before this, I had joined that one Abhi jo unhone kiya tha, that 5 days SOP workshop. one. Yeah. SOP, yeah, and I wanted to join this March to May thing also, but then I couldn't. So I thought Okay. I'll try, I'll join this at Yes. least. Yeah. Yeah. Wonderful. Thank you. Thank you. Okay. So what, Mm, how can I get the details about the course, yeah. about this, these sessions? Uh, Yes, sharing in a while after addressing one or two persons, as Yogini has a question. It is kind of, it's already started. First, there will be 2 calls a week, Yeah. and it will be for around 3 months, matlab 90 days. Okay. And rest sharing the details. The call will be around 2 to 3 hours. We'll come across it just in a while after addressing your No question. problem. Thank you so much. Same to you, my pleasure, and we'll share. Yes, Yogini, just let me open your chat. No, and welcome, Bhumit, Neha, Geetu, Preeti, Ruxana. Thank you for joining. Thank you, Han. Thank you, Krish. Mm, yes. I love food, just conscious when I eat too much. So I am addressing Yogini's questions for all who joined late. From the chat I am reading. I love food, just conscious when I eat too much sweets, as I was diagnosed diabetic. Don't like when others cook food. So Yogini, to you, what does sweet mean? Is it only after diagnosing diabetic you think you have to be control on eating sweet? Um, yes, I feel bloated when. Yeah, okay. Mhm. And do you know, okay, even I had treated the matlab for diabetes too, and sweet or sugar has nothing to do with diabetes too. Though in medical terms, it is said that it should be, it is a way to take care of or to be controlled from diabetes. But actually, sugar has nothing to do with that. And mostly, diabetes has to do with, again, it is the emotions. If I share you the core of it only,
but there are going to be multiple ways, multiple emotions, thoughts, and point of views around that too, for which we have to go deeper into it. But if I share, the core of that is what represents diabetes in our body is, okay, when we avoid, at a certain point, when we avoid being happy, when we had given our happiness, though it might be for 5 minutes, 15 minutes, or 10 minutes, whatever the time limit, time frame is, the moment we are emotionally so down and we have took it as कि there is no happiness for us now because of this, or if that happened, so that starts creating diabetes in our mind, and from mind it comes to our body. So suppose if something happens and you think, oh, now though I can't be happy, you have lost something, you have made a loss, or someone, some loved one, or anything, okay, someone had said no to you, or someone has rejected you, or you were working on some project and you didn't get the desired results, and you thought, okay, oh, now it is not possible to, because of this I am not going to be happy a lifetime, though for a moment, for 5 to 10 minutes, 15 minutes, but you are so emotionally down and emotionally connected to it, okay, you have convinced yourself, okay, there is not going to be any happiness in your life for full life. And after that, whenever you feel like rejected, whenever you hear the no, or whenever you don't get, and you felt, you start feeling sad, or you think that, oh, I am not being happy, or not able to be happy, or not very comfortable with the results, or that said no, your body, your mind gets that, okay, you are not happy, and it is, you are reconfirming it, okay, you are not able to be happy. And that trigger start triggering diabetes in it. Well, so you start avoiding sugars, and whenever you are going to be too happy, you have to control yourself from being too happy, because you start feeling comfort in, well, you start feeling comfort in that way. Okay, not too happy, you have to be in control, because being hurt, being rejected, being hurt, or being failure, whatever you have defined, if someone is saying no or you don't get the desired results, that is very painful for you. So you don't allow yourself, well, you don't allow in a way, your mind doesn't allow you to go to that point where you feel so painful. So you, before that, you start, you are going to be too joyful, your body, your mind doesn't allow you to be that joyful, and you start controlling. And food is one of the major sources to have, to be joyful, to eat everything whatever you like to, because food, we express love with the food, we enjoy eating, you can enjoy and every bite of it whatever you like to, and it is the best thing to control, easiest thing which is visible to us, to our body, to our mind, we can control, and that gives us the power, we feel in control, everything is okay now, nothing can affect, if I can control myself, I can control my body, then rest everything can be taken care of, nothing can hurt me, if someone is hurting me, I can control myself, I can change my mood, if I can control food. That is how we associate the food, but it can be changed, it is just how and what we have took it since this point. And when we see, when we get over it, how to change that, okay, how to change that is exactly, well, if we go to the deeper or core of it, but I will just ask questions in a way which will lead you to the core of it. And what is it for you, that is, that you have given your happiness for, or you have thought in which moment, what was that situation, what was that, what was happening over there, how old were you, and how you took it. And when you see from this space, does it really matters, or do you think that depends, well, your whole life depends on that situation, on such a small incident or situation? I lost of my dad.
when I was 22 years. Okay, awesome. So do you think, okay, though at that time I totally get you, okay, you were very emotional and might have thought that there is no happiness in your life, and now because he might be the person who loves you the most and fulfill all your demands or all your asks, you just have to say. And after that, when you lost your dad, okay, it might be again. At this time, I am just assuming or giving a snippet of it. It can be many different, very different for you, or might be very similar to. But when I ask you and felt I should protect myself and my mom and sister, be careful and not enjoy mercy. Yeah, thank you for that. Exactly, that is what I was sharing around that only. And now you have to protect, take care of it, and you have to be in control. Hmm. So from that point, and there are, it doesn't mean that the moment you thought it and it will create it in your, where they are going after that there are multiple moments, so many moments you have noticed, or many emotions, many thoughts, many feelings when you have felt rejected or you have given up on your choices. And that is how our mind creates, okay, okay, now you have to be in control the moment you go in any ways, not only with the sugar, but anytime you feel you are going to be too much happy, your body will start signaling you, okay, you have to be in control, you can't enjoy too much, you can't have too much fun. So whether you dance, whether you walk, whether you travel, everything you will do isn't going to be, it's going to be in control. And we can cure that completely. Mesh, could you please share some stories of weight loss that your clients have achieved after your sessions? Yeah, yeah, sure, ma'am. Just a moment. And the other thing, as you have written around bloated, that is also uh, around somewhere insecurities, and that too, that can be completely reversed, and all the associations. All so once when we see it, na, ke what has it created, and at that point of time, with that awareness, we start reacting or we start functioning from that. But once when we see it, we had already shifted or moved ahead from that, and now we don't have to suffer or feel in that way. So it starts changing in the moment, and our body and mind doesn't won't create in that way. It is kind of a programming. Yes, control C, we have program, control C is going to be copy. So this is how our mind is programmed. For everyone differently, but it is how we program our mind. Since childhood, when we are born, we have a clean slate. And then 0 to 12 years, again, in details, I will go into it in the session. Because if I go it, it will last more than 3 hours, 2 hours, 3 hours, or also not going to be enough. So just giving in a nutshell for now. So from 0 to 12 years, we start developing, associating, and thinking ki how we are going to live our life. We start developing our programming. Okay, this is how we are going to react. This means this equals to this, and we will live. We start living our life accordingly. And once we change that, it can be completely changed and shifted. Because when we have created, it's around 0 to 12 years how we have to respond in the situations, how we stress about it, how we face. So everything can be changed. And now my कुत्रा as नहीं है we started, कुत्ता um, just muting whenever you like to ask. Just unmute, muted you for now. Whenever you wanted to ask, or if you have any question, you can unmute. And yeah, Mahima, sharing some stories of weight loss. So weight loss around, even if uh, going from personal sessions, I just would like to share it from the group sessions for now. So in group sessions also, I had got so many amazing results. Yeah, like in the last series, someone was on the wheelchair for 13 years, and she started walking just after 7 sessions.
in the very first month. What was that her doctor had said because of her weight, she can't bear, or her legs can't take weight of her body. And whenever she had tried, she got fractured, or she again on the bed rest for 2 to 3 months, 4 months, whatever time it took to recover to be in that to be in that position. And in the in the very first month, it has completely cured. She started walking on her own without wheelchair, without any support. And that is what she had shared on the call only. And in that call, I wasn't working on that leg pains, exactly on leg pains. It was just whatever was flowing, whatever how she had perceived her weight, what all the fears as it started dissipating, it has completely changed. Another thing, and for everyone, there were around 18 to 20 people. Uh, from that, yeah, I can say कि 17 to 18 who were attending regular call, they all had started eating everything they like without getting weight, without gaining weight, because most of them were like that कि they don't, whatever the weight was, most of them were comfortable or they want to reduce, but not so significant that they have to reduce. They have to allow themselves to eat whatever they like to eat. So every one of them mostly had started eating and enjoying everything, including desserts, including eating instead of 3 meals, 5 to 6 meals, or a good size of portion that they feel fulfilled. Not from the space of okay, we can't eat more or else we will gain the weight. And few of them who really wanted to reduce had reduced their weight also. And some of them, as we have Chetna here, uh, uh, there was so many other things to focus on besides weight, though weight was her primary reason, we reason to join the call. But it has shifted to all the allergies. There were something many few of other things that were going on that was bothering him, that also shifted. And beside with that, to the extent I can say many things shifted around weight also. It is way to go. Because we are holding and associated so many things, so many emotions around family, around friends, with love, care, hatred, guilt, anger. Can I know which therapy will you use? Picky, it will be a combination of hypnotherapy and access. And there is not going to be any dieting, any precautions required. No necessities. Neither you have to take dieting or any supplements. It is going to be purely just by talking as we are talking now. It is going to be kind of a personalized sessions in a group setting. Though we are going to be in the group, but as I had addressed earlier, I had addressed Bhavita, and now I was addressing Bichan, sorry, yeah, Yogini question. So in that way, I will we are going to address one by one person at a time. So it is going to be kind of a personal session in a group setting. And we go to the core of it for everyone. It is not that we give up, and time is not a limitation for me. And everyone is going to get recordings. We will share the recordings too for that. Normally, if I share, okay, I had started my calls earlier when I started my first series of that. I had kept a time only for 1 hour. But all the 24 calls, it has went more than 2 hours every call. So after 2 to 3 calls, I had officially announced the call. So it is going to be more than 2 hours, 2 hours plus only. And everyone was so excited if someone has knee pains. So if their knee pain had gone completely, lower back pain, hip joints, someone has shoulder pain,
frozen shoulders, they had also, matlab, it was also completely dissipated. Besides weight, I am talking, as I had already shared. Uh, weight was the primary, matlab, most of them have got, matlab, came to the point that they can eat. They had given up all the dieting. Most of them, one or two were there who need to leave. Will catch up on recording. Yes, Yogini, sure. Thank you. So we'll share the details in person. Thank you. Hello, Dr. Seema, Anshita, Neha, Urmi, Bhageshri. Hello. How are you? Thank you for joining. I missed the first part. Yeah. Just go through the recording. I had shared some of Okay. how it is going to work and address few of them. One is Bhavita, other one is Yogini, and one or two questions. उसको बोला मैंने नींबू Seven. पानी के लिए, Good. नींबू पानी So से how it works, what it takes, and as you were there only, the thing I had shared, there is not going to be any dieting required, not any exercises. There is no need, but no necessity of anything, whether dieting, whether exercise, walking, or supplements, and still you can eat whatever you like to, however, how much is it, or kind of whether it's going to be sugar, whether it's going to be vegetables, healthy, unhealthy, junk food, fast food, nothing, no restrictions at all, and still you're going to be perfectly fine. In that way. Because from the needle strikes to our hand, body is just a reflection of what is going inside. How we are taking or how we are dealing with whatever is happening, how congruent we are, or we are thinking with thinking something and doing something. Just a minute, Anshita. And the weight will go through the recording. Thank you, Miss. Yeah, or me, thank you. And our body, the weight represents in our body, whether it's more or less, it is reflecting how comfortable we are, how congruent we are with our ask or whatever we are thinking and doing. And whenever we are insecure, whenever we are not comfortable, it shows up in the body. Whenever we are not willing to lose, not willing to give up some situations, whenever we are not comfortable with any situation, or that we start gaining that and start showing up in our body. Yes, Anshita. And after that, my mom, yeah, yeah, how are you? Yes. Good. So एक ना चीज repetitively होती है मेरे साथ, like especially if I am in family gatherings, especially like a function, Yeah. like अगर या wedding का function है या कुछ भी है, जैसे अभी भी I went to Pune, तो Yeah. वो just in one day, no, my body gets swollen up, like face, हाथ, और एकदम ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी बहुत अनकंफर्टेबल हो गई है, एंड देन माय हैंड्स, लेग्स एंड फेस, मतलब तो दिखता है कि आप एक दिन देखोगे ना पिक्चर, सेकंड डे देखोगे तो बोलोगे ये है ही नहीं लड़की. अच्छा. ओके. समझ थोड़ा मैं रही हूँ, बट हाँ, किन सिचुएशंस में फूलता है? सिर्फ फंक्शंस में फूलता है, जब ऐसे या नॉर्मली भी कुछ भी खाते हो तो भी वो होता है? नहीं, वैसे नहीं होता है. वैसे मेरे को काफी लाइक जब से एक्सेस में तो आई हूँ 1 ईयर से, तो मुझे नहीं हुआ है स्वेलिंग का इशू. ओके. बट जैसे अभी मैं दुबई से आई तो सब लोग बोल रहे थे कि एक आध महीने में मैंने लूज कर दिया वेट, या जैसे लास्ट दिसंबर से भी मेरा थोड़ा भी कम हुआ है. अच्छा. लेकिन ये स्वेलिंग का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है पार्ट की अचानक से क्यों हो जाती है. पहले मैंने एक बार ही रूल आउट किया कि अल्कोहल से तो नहीं है. एक बारी मेरे को कुछ ट्रिगर हुआ था, लाइक एक सॉन्ग बहुत डीप, उसमें मैं चली गई थी. लेकिन अभी मैं रिसेंटली गई थी नानी के घर, तो वहां पे तो लाइक आई एम कंफर्टेबल. जैसे भी आपने बोला कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो बॉडी शोज अप. वहां पे तो आई वाज कंफर्टेबल एंड हैप्पी. स्टिल वो स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, दिख रही थी. Just
क्या हुआ था? रोज ही हुआ था कि पहले दिन पे या पर्टिकुलर किसी दिन पे हुआ था? मतलब मैं गई और उसके नेक्स्ट डे। ओके। और नॉर्मली इधर होते हो तो नहीं होता है अभी वो खाने से, जो नहीं पहले होता था अभी नहीं होता है? ओके। तो जैसे उस मोमेंट में जाओ, जब पहुंचे गए और पहले दिन पे नॉर्मल था, नेक्स्ट डे पे क्या हुआ था? किस चीज से कनेक्ट कर रहे थे या क्या इनसिक्योरिटी थी? अगर पूछूं तो पहली चीज कौन सी आ रही है, सबसे पहला अटेंशन जहाँ पे जा रहा है? सैडनेस और एक्सेप्टेंस। ओके, व्हाट इज दैट सैडनेस अबाउट? Just go with the flow, whatever the first thing comes, it doesn't have to be exactly that. ट्रूथ आ रहा है, Huh? ट्रूथ आ रहा है, लाइक Yeah. So what is the sadness around? What sadness are you holding or getting triggered around that? Were you missing something? Were you relating to it? Something? मतलब दिस टाइम आई Or you were वाज feeling alone? Okay. Yeah. And where was that coming from? What was triggering? दिस टाइम आई कुड से कि मे बी आई वाज मिसिंग समवन, तो पॉसिबिलिटी है कुछ Okay. ज्यादा ही मतलब हर्ट थी मैं किसी चीज को लेके। Yeah. और इवन फर्स्ट भी मतलब वो पास्ट में जो मेरा बचपन, वो चाइल्डहुड, वो है ट्रॉमा, वो ही फर्स्ट फर्स्ट ट्रिगर उसमें था। फर्स्ट ट्रिगर उस पे था। ओके। एंड जो सेकेंड टाइम मैं दिल्ली गई थी अभी नवंबर में, सो मुझे वहां पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के और दूसरे लोग क्योंकि बहुत ज्यादा फेक और जजमेंटल लग रहे थे। ओके। तो लेकिन इस बारी लाइक मैं कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में थी, मतलब मेरे नानी का घर इज कंफर्टेबल। But were you एंड जो comfortable, or as you said, कि it was triggering you? The fear that you were being sad and the sadness was triggering you, as you say. मे बी दैट कुड Because बी deep ड्यू down टू we hold the emotions, then the similar situation arises ना कि सब जब मिल रहे हैं फैमिली का काइंड ऑफ, वो भी हो सकता है डीप में तो और ज्यादा, क्योंकि वो बचपन से जैसे आ रहा है तो उस हर चीज से जाएंगे डीपली, तो कि वो बचपन में क्या हुआ था, वो कहाँ पे इमोशंस किस किस लेवल पे क्या क्या ट्रिगर्स हैं, क्या क्या एसोसिएशंस हैं। पर वैसे जैसे कोई फैमिली गैदरिंग जो नानी के वहां जैसे पहले मिले थे तो सब जने साथ में है, किसका क्या रिएक्शन है, तो वो एक्सपेक्ट मतलब किस जो फेक बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुश हो, पर डीप डाउन आपकी बॉडी को माइंड को पता है अंदर बैठा हुआ है कि ये सब फेक प्रिटेंड करते हैं, दिखते हैं। तो उन सबके साथ मिल रहे हो या खुश हो रहे हैं तो पता है, एक तो खुद के इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, दूसरा साथ में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो है मन में कि ये फेक प्रिटेंड कर रहे हैं तो वो भी एक साइड के इतने खुश दिख रहे हैं और पर प्रिटेंड ही कर रहे हैं। मतलब वो होता छोटी है सी अगर बातें भी ट्रिगर। हाँ, क्या वो होता है? मैं अपने लाइक बुआ और मतलब दिस साइड ऑफ द फैमिली मिलती हूँ तो मैं वो चीज बोल सकती हूँ। हाँ, नानी की साइड का मैं ऐसे नानी श्योरली के नहीं बोल साइड क्या सकती हूँ। ट्रिगर कर रहा था जो आपने बोला कि सैडनेस आ रही थी, तो सैडनेस क्या? वो ये सिचुएशन से जो अभी थोड़ा मैं गो थ्रू कर रही हूँ। हाँ, तो वो सिचुएशंस भले कितनी भी खुशी में थे पर वो भी ट्रिगर कर रहे थे, वो आपके थे माइंड में और खुश होना प्रिटेंड कर रहे थे या सोच रहे थे कि इस चीज से खुशी मिलेगी, मतलब वो चीजों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। मतलब मुझे लगता है नहीं कि मैं जाना बहुत चाहिए ऑफ हो लेकिन गई थी, हाँ। मतलब कि मैं प्रेजेंट नहीं थी और मैं उस वो जोन में थी वापस की। वो ऐसे नहीं, जब भी इफ लाइक यू आर अपसेट तो फिर वो एकदम डीप चले जाते हो, अप डाउन, और फिर आप गुम हो जाते हो। आई डोंट नो इफ दिस मेक्स सेंस। या आई एम टोटली गेटिंग बट कि जो हाँ बोल हाँ, रहे हो उसमें समझ पा रहा हूँ कि सब मतलब जैसे हाय वीरेन जी। हाय हाय अंशिता। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कि आप ऐसे कुछ चीज को लेके अपसेट हो और फिर ऐसे एकदम ड्रॉप हो जाते हो, हाँ तो वो पॉसिबल है कि वो एक स्पेस पे मैं चली जाती हूँ जो हाँ। इतने टाइम तक नहीं रहती हूँ, बट आई थिंक Pavita, yeah, Pavita, you can be. Thank you for saying. हाँ। इतने टाइम तक स्टिक नहीं करती हूँ, बट मे बी शायद वो चीज वो स्पेस पे शायद मैं पहुंच जाती हूँ। हाँ, ओके। मे बी।
तो इसमें जब जो करेंगे ना सीरीज में आएगा, तो वो उसका कोर कहाँ से आ रहा है, क्या क्या इमोशन वो ट्रिगर करके एक बार जब वो कोर से निकल जाएगा ना, तो आपका रिएक्शन, हमारा माइंड रिएक्शन बदल जाता है चीजों का देख के। क्योंकि अब जो करवाने चाहूंगा वो एक सेशन में नहीं होगा, इवन वैसे भी करेंगे ना तो अलग अलग लेयर्स में वो चीजें होती है कि मैं बचपन से इतनी सारी चीजें, इतनी सारी उसके ऊपर लेयर, हर चीज को कोई छोटी कोई बड़ी, किसी को जॉय के साथ जितना इफेक्ट वो लग रहा है कि जिसमें दुख हुआ था, जितना खुशी के साथ भी एसोसिएट किए हुए होंगे ना, उतना ही वो भी इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर खुशी में मोमेंट में खुश है और एक्सपेक्टेशन हमारी बन गई कि इसमें ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए इंसान या तो फैमिली, अगर वो भी नहीं होता है ना, रिएक्शन थोड़ा सा भी बदलता है, तो हम उस वो भी हमारी बॉडी में और माइंड में ट्रिगर हो जाता है कि हमने तो सोचा कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हुआ, मतलब हमारी वैल्यू नहीं है, या कहीं ना कहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा अपना इंपॉर्टेंस मेंटेन करने के लिए, अपने लिए अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या सिक्योर फील करने के लिए, वैसे ही फैमिली का पार्ट बनने के लिए, या फंक्शन का इवेंट का पार्ट बनने के लिए। तो इतनी छोटी छोटी चीजें, और जब उसको एड्रेस करेंगे ना और देखेंगे, तो वो सारी चीजें, yes Bhavna, got your message on the WhatsApp, but yes we will share the recordings too. तो उनको जैसे जब डीप तक जाके एड्रेस कर लेते हैं और क्योर करते हैं, तो उसका रिएक्शन हमारा बदल जाता है, क्योंकि वो जो जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो चीजें बचपन से लेके हो सकता है मोस्ट ऑफ द चीजें जिस तरह हम रिएक्ट करना सीखते हैं, रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, वो चीजें ज्यादातर 0 से 7 साल या मैक्सिमम 0 से 12 साल की एज में आती है, अनलेस कोई मेजर ट्रॉमा के अलावा। बाकी सारी चीजों में ये मतलब सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, वो सारी चीजें वहां से हम सीख लेते हैं और वहां से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। सिचुएशंस बदल सकती है, जैसे बचपन में स्कूल में होते हैं, खेल रहे होते हैं बचपन और बड़े होके बिजनेस में है, रिलेटिव्स को किसको किस तरह डील करना है, पढ़ाई की जगह, स्कूल की जगह, बुक्स की जगह लोग आ जाते हैं, बिजनेस क्लाइंट्स हो जाते हैं, या बॉस, या जो भी जिस सिचुएशंस में है, रिलेशनशिप्स को हैंडल करना होता है, भाई बहन की जगह, फ्रेंड्स की जगह, काइंड ऑफ इन लॉज को, या जिसको भी हैंडल कर रहे होते हैं, बॉयफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स है, जैसे भी, तो सिचुएशन उसको ट्रिगर या ऑपरेट या रिस्पॉन्ड वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे हम बचपन में करते हैं। बुरा भी वैसे ही लगता है, अच्छा भी वैसे ही लगता है, स्ट्रेस भी उसी तरह से हो जाती है। तो मोस्टली रिएक्शन हमारा वहां से आ रहा होता है, तो उसको एड्रेस करके वहां से चेंज करके जब इस चीज को देखेंगे इस अवेयरनेस पे, और वहां पे कहाँ से क्या इमोशन आ रहा है, जब उसको रिलीज करेंगे, वहां से चेंज कर देंगे कि देखो अभी भी वहां पे या सेम वे में रिएक्ट करने की जरूरत है, या वहां पे वो छोड़ना चाहते हो, रिलीज करना चाहते हो। तो जहां से वो छोड़ोगे और चेंज होगा वहां से, तो पूरा रिएक्शन अभी भी आपका बदल जाएगा, रिस्पॉन्ड करने का वे हमारा बदल जाता है। और जब रिस्पॉन्ड करने का वे बदल जाता है, तो वो बॉडी रिलीज हो जाती, मतलब नॉर्मल वे में, नेचुरल वे में फ्लो करती है। तो अगर वेट है, पेन है, या डिसीज है, जो कुछ भी हमारी बॉडी में शो अप कर रहा है डिस्कम्फर्ट, वो नॉर्मल वे में आता है। कि जब हम सिक्योर फील करते हैं, अगर हम नॉर्मल है, फ्लो में चल रहा है, तो ना फियर होगा ना इनसिक्योरिटी होगी, तो वो बॉडी में शो अप भी नहीं होगा ऐसे। जैसे कभी कभी मेरी बॉडी बहुत हैवी और स्टिफ हो जाती है, और कभी कभी बहुत लाइट हो जाती है। आज जैसे स्वैप के बाद अभी मैं लाइट हूँ, कल भी मैं लाइट थी, बट कभी कभी ऐसे बहुत ज्यादा स्टिफनेस और हेवीनेस आ जाती है कि जैसे तो वॉक करना भी बहुत बड़ा काम है, ऐसे हो जाता है। प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी, बट हैवीनेस पर और हैवीनेस फील स्टिफनेस। होती है कि कंफर्ट हाँ नहीं, कुछ ना कुछ वो माइंड हाँ थॉट्स आते होंगे, वो हाँ, आते होंगे, बैठे अकेले तो सरफेस पे आ रहे हैं, या कुछ देख लिया टीवी में, मोबाइल में, किसी का पॉसिबली। सुन लिया बात करके कि अच्छा इसको ये, हाँ तो वो अपने अंदर जो इमोशंस हम होल्ड कर रहे हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, काइंड ऑफ वहां से, मतलब रिस्पॉन्स उस वे में। हाँ, पॉसिबली। तो वो भी पूरा, मतलब उसके भी जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे, जो जो चीजें आती जाएगी, वो एकदम शिफ्ट होता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ मेगा, Hi. hi, how are you? Good. How are you? Awesome, thank you. So actually, काफी कुछ to an extent I think got covered with what Anshita was saying. My question was कि okay, exercise नहीं करना, diet नहीं करना, मतलब all of that तो करना क्या है? And I think you threw some light on it that you kind of get to it. But I still had the question कि a lot of us might be quite aware of our past कोई whatever traumas.
And Yes. also in other things, if there are certain things that are causing trouble, everything cannot be changed. Things that have happened in the past cannot be changed. Somebody who's died, for example, will not come back alive. How does it, Yeah. knowing it is one thing, getting to it through asking questions, how do you change Yeah, how it you is are? not only about asking questions, Hanji. it will make you so present in this moment, because at that time your awareness was that some person has lost, might be dead or whatever. You said that you are right. No, The person was so I had anyways. I had a boyfriend who passed away when I was in college. Acha, okay. Mhm. So at that time you were completely dependent in a way that you have thought or planned your whole life, Yeah, or whatever years, at least that college time, or some number of years कि, okay, this is going to how it is going to be my life with him. yeah, And when he left suddenly, you were in the shock. मतलब you got into it कि how you weren't aware कि how to deal with it. yeah. And I mean, this is But just one with this thing. awareness, Various things yeah, that is happened. giving you the example of just one thing Hanji. only, and we will deal, or मतलब we will address everything in that way only, and or much more deeper to it too. Okay, one thing is going to be from where and how you have learned that if some person leaves, that you can't live without him, or it is going to be a trouble for you. It might be you have seen since childhood. So Yeah, so someone, whether in the family, whether in the, yeah, sorry, go ahead. I'm aware now that and I mean this happened in 2004. Yeah, Up to I'm going to be 40 this year. yes, It's a long time ago. But yes. recently, after joining Access, I realized that back then in 2004, when he died, I kind of kept telling myself कि now, that whole dream of having a fabulous life Yeah, is over. And now you just have to किसी तरह इस compromise जिंदगी के को चलाना काट लो है. and have very low expectations because nobody will be anywhere near what that guy was. And somewhere I believed it that okay, now my life has to be average. And literally my life has become, I have become, and my life has become something super magical to average. Yeah, and because exactly we are the creators of our life, But and even after wherever, coming to a realization, it's not like I'm being able to change it very easily. yeah, realization doesn't mean shifting, or you are ready to release that or shift that, Yeah. change that. When you are realizing that and willing to change is completely different. When you're choosing to operate from different point of view, giving up that thing, that limitation. So do you think he was the only person who can make you happy? Now with this awareness, if I ask you, I just remember now that at that time I had thought it for just maybe 6, 7, 8 months or maybe I years said of I was failure. addressing, as I was addressing Yogini, if you were there at that time, I had said the same thing. We create a pain, disease, or anything, the emotions, even for 1 minute only, not for, it doesn't Hanji, require even 15 minutes or an hour. Even for a so it's one not like I moment, don't you believe are it so now. deep. My life is rolling out as per that Yeah, but you belief are operating system. from that. You are responding in that. Yes, exactly. You don't believe Even it, I but you don't are believe it responding in now. a way. Yeah, that is where my role comes. Because we can't change once we had made the plan, program, we can't change that thing. Because we had already closed that once the programming is done, the control C is going to be copy. So do you think you want to paste, you have to use control V instead of control C, or unless you change, go deeper, change all the programming into it that you wanted to paste with control C. So either you have to use control V, or you have to use the programming, edit the programming and change the programming of the system. And when we lock it, we are not able to edit that. Alter that. Yeah, go ahead. Were you asking something? Huh, I mean, I just found that interesting because I came to the realization and I was just like, okay, it's been now 6, 8 months, 10 months. I've realized it, and I Yeah. tell myself I'm choosing different, but it's not happening. Yeah, And it's choosing different, but till the time you are not going to release that and give that up, okay, do you still you're thinking if go to that point, your one part of that is stuck over there. As a trauma, it's holding, okay, the moment it comes,
to choose for yourself or to be happy, you mind is going to be you can't be that happy, because at that time you have given yourself a condition that you now you just have to compromise or to live. So why? So basically, even though the past can't be changed, these things can be worked on and cleared out. Yes, past can't be changed. We don't have to change the past. We have to give up, because that is not past. You are holding it in the current situation also. Your part is stuck and you are responding in this moment also from there. We are operating Oops. from there. Okay, great. Thank you. Because you see, na, matlab, Or even when you are Umesh, saying this, na, this के हाँ just जी. when you are saying this, ना, कि भाई उसमें मैं बोलती हूँ कि छोड़ दिया ठीक है कि गिव अप कर दिया या क्या, पर वो पैटर्न भी उस टाइम पे भी कहाँ से आया था कि आपको लगा कि अगर कोई 1% जा रहा है तो अब वैसे ही जिंदगी भले 5 मिनट के लिए अभी, पर वो प्लांटेशन उसका और डीप में है. You might have seen in Yeah, the somewhere movies, in you the are right family, or because like, so we go to the core of it. somewhere you are right in the sense I still believe you can't find anybody like him, but obviously no two people are alike. Yeah, that is what you have to go, matlab, from where it is coming and see that what the situation was, and at that age, at that point of time, how you were seeing and perceiving things. Does it require any comparison? You can have much better or much lesser. It is exactly your choice what you would like to have and what you like to create. And when you are saying that you are the source of your life, that person is not the source, or no one, even parents also, or the partner, no one is our source of life. We are going to create and have exactly what we like to have. So we go to Right. that point till that point, and when it changes, then it is going to be completely released. That's why I was saying it is not going to be cured, or matlab, you won't get over it in just one session too. I don't say that. That's why I took matlab, हाँ, mentioned or मेरे it's पिटारे में long और time. बहुत कुछ है. हाँ, वो बहुत सारी चीजें एक लिख रही थी मैं. हाँ, सारी बता. Great, thanks so much, Umesh. My pleasure. Because when people come to that, ना कि उनको लगता था कि सिर्फ ये चीज हो जाएगी तो सॉल्व, जैसे मैंने बताया, शेयर कर रहा था आपने शायद तो थे स्टार्टिंग से ही, कि जितने जने भी वेट के लिए आए थे ना लास्ट में, उनमें से 70-80% के लिए एक तो उतना ही काफी था कि हमारा जितना वेट है उतना मेंटेन हो जाए, हमको कुछ करना नहीं पड़े, तो उतना भी इनफ है. ज्यादातर लोगों का वो था. और दूसरा था कि ये पेन जो हमारे हैं, ये डिसीज है, ये वेट की वजह से हाँ अगर जी. ये सॉल्व हो जाए तो उनको वेट से पड़ी नहीं थी, वो उतना जितना था उसमें कंफर्टेबल थे. Okay. तो जो पेन उनको लग मतलब रहा था I कि ये joined, I पेन can वेट do की a वजह से push-up है, अगर solve. वेट कम हुआ ना तो पेन कम होगा, ऐसे. तो वो मतलब पेन वैसा जब ही कम हो गया तो तो मैं उनका एक्सपेक्टेशन वेट के लिए तो फोकस वैसे भी बोला कि अभी हमको वो करना ही नहीं है, काइंड ऑफ भाई वो हमको जो चाहिए था उससे 100 गुना ज्यादा मिल गया, ऐसे. नाइस. क्योंकि उनके माइंडसेट उनका वो था कि अगर ये होगा ना तो ही हमारा वेट कम हो सकता है, ये डिसीज या पेन जो भी हम होल्ड कर रहे हैं वो उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है. ग्रेट. और चीजें निकलती है कि जब जहाँ पे लग रहा होता है, जैसे वो नी पेन वाला बता रहा था, 67 की अराउंड की एज थी, जो 12-13 साल से व्हील चेयर पे थे. हाँ जी. उनके अराउंड जो इमोशंस आए जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, मैरिज के अराउंड से डीप में गए तो स्कूल में किस तरह से लोग उनको देखते थे, किस तरह से चलता था, सोचते थे, टीचर किस तरह रिस्पॉन्ड करती थी, या बचपन जो पेरेंट्स उनको सिखाते थे कि ये करना है, ये क्या क्या लिमिटेशंस करके रख रहे हैं, खाने के लिए क्या बोल रहे हैं, उसको वो किस तरह ले रहे हैं, प्यार ले रहे हैं, कहीं पे वो कॉम्प्रोमाइज देख रहे हैं, तो वो किस तरह से चीजों को हमने मतलब जोड़ा हुआ है. जैसे ही वो चीजें टूटी ना तो एकदम से वो वॉक करना 6 से 7 सेशंस में 13 साल से व्हील चेयर पे वॉक करना शुरू हो गया. वो सोच सकते हैं मतलब कितने हमारे इमोशंस वर्क करते हैं. और इवन हाथ में सुई लगने से लेके डेथ तक हर चीज हमारा रिफ्लेक्शन होती है कि हम किस तरह क्या ले रहे हैं, वो बता रही होती है. पैर में कांटा भी ऐसे ही नहीं चुभ सकता है, चुभता है तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि हम कहाँ पे सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, और वो पैटर्न कहाँ से आ रहा है रिस्पॉन्स का. तो जब उसके डेप्थ में और वो चेंज हो जाता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है. फिर मैं डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, क्रोनिक डिसीजेस के लिए भी करवाता हूँ बेड रेस्ट पे, जो बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे होते हैं. डॉक्टर ने जब दिया होता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, भाई बॉडी में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है किसी के नीचे वाले पोर्शन में, भाई हिप जॉइंट से लेके, तो वो भी
2 से 3 मंथ में उसमें भी मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। सुनने के लिए आंखों का चश्मा बिना ऑप्शन के निकल जाता है। वाओ। लास्ट 15 साल से कर रहा हूँ प्रैक्टिस। और अपनी सिटी में, इंडिया से बाहर सब जगह से है क्लाइंट्स। मोस्टली अभी तक तो मैंने समझा तो ज्यादा प्रमोट भी नहीं किया है। जो भी मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं वो रेफरेंस से, जो भी एक जना कराता है उसको इतना सेटिस्फाइड होता है कि 2-3 जने रेफर करता ही करता है। अमेजिंग। क्योंकि मेरा एक रहता है, एक तो टाइम का कोई वो नहीं रहता है, अवेलेबल भी मोस्टली हर टाइम ही रहता हूँ, अनलेस मेरा सेशन हो तो टाइम के लिए, बाकी सुबह हो, शाम हो, आधी रात हो, काइंड ऑफ। और दूसरा वो टाइम का वो भी नहीं है कि 1 घंटे का सेशन है तो 1 घंटा खत्म हुआ तो मैं आधे में सब कुछ छोड़ दूंगा। 1 घंटे की जगह 3 घंटे भी सेशन जाएगा तो वो उतना ही खींचूंगा, उसको आधे में रोकने की टाइम बाउंड की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे लगता है कि हाँ ठीक है, थक गया है, आप खुद सामने क्लाइंट थक गया है, आज के लिए हो गया, तो उस टाइम पे एंड करते हैं, या वो टॉपिक जिस पे जो सरफेस पे आ रहा है उसको एड्रेस करके फिर। और मेरे लिए वो फन है, जॉय है, जो देख के खुशी मिलती है, उसका किसी और चीज से मेरे लिए कंपैरिजन है ही नहीं। मैं वो उस स्पेस से करता हूँ। हाँ अंशिता। मैं कुछ और पूछ रही थी, लेकिन हाँ, आई थिंक मैं कहीं और पहुंच गई। अच्छा। मैं बोल रही थी कि अम, मतलब मुझे ये समझ तो आता है कि लाइक हाउ यू डू इट एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ एक अगर ये चीज है कि वी कॉल आर एनर्जी बैक, ठीक है, फ्रॉम एवरीवेयर, एवरी लाइफ टाइम वी हैव गिवन, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला महिमा ने कि इट्स ओके राइट महिमा, मैं आपका बोलूं तो Yeah, sure. Absolutely तो fine. जब भी हम ये चीज फॉर एग्जाम्पल करते हैं दैट वी आर कॉलिंग आवर एनर्जीज बैक, और वी आर डूइंग क्लियरिंग्स, और वी आर गेटिंग हीलिंग डन, या दूसरे टाइप की भी, एक्सेस भी और दूसरे टाइप की भी, और सब कुछ ठीक है। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हम लाइक मिस आउट कर रहे हैं, या एनर्जी कॉल कहाँ से करनी है वो कहाँ पे पता चलेगा? वो तो सिर्फ कॉल कर रहे हो, पर उस चीज के साथ प्रेजेंट कहाँ पे, जहाँ पे ये कॉल करने से नहीं होती है, वहां पे जाके मैं रिलीज करने से होती है। वो पॉइंट होल्ड कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब उस टाइम पे जो इमोशंस है, सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो क्या था। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जो अभी आपने बताया, जैसे आपके लिए ही अगर वो पूछा तो सैडनेस, तो सैडनेस आ कहाँ से रही है, तो उसकी कहाँ कहाँ पे कितनी सारी एसोसिएशन है। आप बोलोगे कि मेरे को अभी खुश रहना है, तो अभी के लिए मूड चेंज हो जाएगा, कहाँ पे भी ब्रीथिंग करके या पैटर्न, या वो बोल रहे हो आई पाव कर रहे हो, जो भी चीजें, तो अभी के लिए सेटल हो जाएगा। कुछ कुछ लेयर्स जो अभी वाली होगी वो सरफेस पे क्लियर हो जाएगी, पर डीप डाउन जो पैटर्न बना हुआ है वो, कि इसका मतलब सैड होते हैं, इस सिचुएशन में ये हुआ था तो सैड, तो वो एसोसिएशन कहाँ पे आ रही है, वहां पे जाके उस सिचुएशन में हम सिर्फ रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम की अवेयरनेस से वो रियलिटी थी। बट क्या वो जरूरी है? मेरा क्वेश्चन वही है कि हम बोलते हैं जरूर नहीं होता एनीथिंग तो आप एवरीथिंग छोड़ दैट देते। कम्स अप। अच्छा हो गया होता, नहीं तो उस चीज से अगर होना होता तो, जितना होता है चेंज होता है, नहीं हो रहा है नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर वो लेयर बाय लेयर हो रहा है। अगर 1,00,000 लेयर है तो उसमें से समझो 1,000 लेयर्स कम हो रही है, या 500 है तो 5 लेयर्स कम हो रही है, और तो वो जैसे लाइक लेयर। हाँ। हम तो फिर भी कहीं ना कहीं अवेयर हैं और इसमें हैं, ठीक है। बट लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अपने रिलेटिव को बोलती हूँ कि मतलब उनको XYZ प्रॉब्लम है, जैसे माय आंट हैज डायबिटीज एंड एवरीथिंग, तो हाँ। अभी कुछ लोग हैं, जैसे अगर मैं थीटा हीलिंग भी उनको करवाती हूँ तो वो बैक नहीं जा पाते हैं। हाँ। जैसे हमें पता है राइट कि चलो जाना है, उस मोमेंट में फील करना है, बट व्हाट अबाउट दोस पीपल हु कैन नॉट गो बैक? ये जाना है, मैं आपको बोल नहीं दूंगा कि आप ये कर लेना, स्पून फीडिंग करूंगा, हाथ पकड़ के उस पॉइंट तक लेके हाँ जाऊंगा पूछ के। और वो हाँ। कैसे लेके जाना है, जब मैं आपसे पूछूंगा ना क्वेश्चन, जो आप शब्द बोलोगे उन शब्दों को सुन के वो शब्द पूछूंगा आपसे, और आप उस पॉइंट पे जाओगे। कंप्यूटर में कैसे मतलब फाइल नेम डालते हैं भाई, ये फाइल लाखों करोड़ों फाइल्स होते हैं, तो जब वो फाइल नेम डालेंगे तो वो फाइल खुल के आएगी। तो जब हाँ, मैं लेकिन आपको कुछ लोग डर सुनूंगा, नहीं मैं जाएंगे पीछे नहीं, जाने से?
नहीं, वो पीछे नहीं जा रहे हैं, वो हम होल्ड तो कर ही रहे हैं जहाँ से आज भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर वो छोड़ दिया होता तो वो रिएक्शन वहां से नहीं आ रहा होता, रिस्पॉन्ड वैसे नहीं नहीं मतलब आता मैं होता बोल बॉडी रही हूँ जैसे स्पेशली अगर कोई अब्यूज के थ्रू गया है या कोई में। जो भी XYZ रीजंस जो भी है वो हाँ हाँ ये कर सकते हैं मतलब। हाँ, कर सकता है ना। अगर अब्यूज को छोड़ोगे नहीं तो अब्यूज तो रहेगा ना। आप बोल रहे हो मैंने छोड़ दिया पर उसको देखना नहीं है, तो वो छोड़ा कहाँ पे है? मतलब हम और उस लाइक अब्यूज अगर को फॉर भी एग्जांपल देखने के मैं लिए वो अब्यूज भी था कि नहीं, मैं उस पॉइंट तक लेके जाऊंगा कि वो क्या था, वो अब्यूज था कि नहीं, उस टाइम पे आपके क्या एक्सपेक्टेशन थे, क्या इमोशन थे, क्या फीलिंग थे, उसको किस तरह ले रहे थे, और वो अब्यूज लग रहा था तो वो कहाँ से आ रहा था, और कहाँ पे उस चीज को अब्यूज बनाया है। वो एक्चुअली अब्यूज है या वो अब्यूज अलाउ कर रहे हो आप किसी डर की वजह से, या वो किसी वे में आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे खोने के डर से, चाहे इसके बाद दूसरा नहीं मिलेगा, इससे अच्छा नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं मिल सकता है, ये कंफर्ट नहीं मिल सकता है, जो भी चीजें डर है या वो है, तो उस पॉइंट पे जब उस अवेयरनेस से जाओगे, वो डर या वो अवेयरनेस उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था या फंक्शन जिस वे में रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो कहाँ से और क्या था, पैटर्न क्या थे, और वो मैं नहीं बताऊंगा, वो हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा था जो ज्यादा डीप में बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछ के एक दो एनर्जी आ रही है, बाकी वो उसमें हर चीज को आपसे ही पूछूंगा, और वही मेरी मास्टरी जो हाँ है ना, बट वो दूसरे वही जब लोग मैं सवाल पूछता हूँ ना, जो आप जवाब दोगे ना मुझसे, कितना भी फालतू लगेगा आपको, पर उसमें से मेरे को जहाँ पे लगेगा ना कि ये शब्द पे पूछने से, तो वो शब्द पूछूंगा और उसके डेप्थ में चलते जाओगे। जैसे आपने बोला पहले कि मतलब जैसे मुझे मुझे मैं खुश मेरा थी, पता मेरी है कि शादी में कोई चलो वो नहीं था, बिल्कुल हैप्पी। आपको जितना पता है वो 10% भी नहीं है, हाँ जितना कॉन्शियसली पता है। जब हम्म जो चीजें आएंगी तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, और बहुत सारी चीजें जो वैसे ही पता होगी, पर उनको जो देखने का नजरिया होगा ना आपका, जब तक आप खुद देख रहे हो तो देखने का नजरिया वही होगा आपका, कि उस चीज हम्म को ऐसे ही देख रहे हो कि मेरे साथ अब्यूज हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ था। पर जिस नजरिए जिस पेज से मैं दिखाऊंगा ना, और जब मैं बोलूंगा, तो वो एक्चुअली क्या था, उसको देखने के लिए एज अ थर्ड पर्सन जब उसको देखोगे, तो वो सारी चीजें क्या क्या हो रहा मतलब है, क्या लेकिन हुआ था, वो सब चीजें देखोगे ना, उसको पिंकी दोगे। मैं हाँ, मैं बोल रही हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुझे पता है कि चलो मैं रेडी हूँ और मैं ऐसे जा सकती हूँ या सोच सकती हूँ या वो आपको ओपन करने हूँ। की जरूरत नहीं है। हाँ सोचने मतलब की आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो पता है, नहीं होता तो भी जा सकते हो आप, क्योंकि हम जब बॉर्न होते हैं ना, इवन वूम में होते हैं, तब की भी मेमोरीज हमारे अंदर होती है, माइंड के अंदर। मेरा और सिंपल जो भी क्वेश्चन करोगे। है कि हाँ मेरे एक रिलेटिव है हाँ और उनको डर है बहुत ज्यादा, हाँ तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। हाँ, 100% रहेगा। ओके मैं वही बोलूँ, उनके लिए उनको पीछे जाने की, उनको खुद को नहीं जाना है पीछे। मैं पूछूंगा, वो अपने आप ही होता जाएगा, कैसे वो जवाब देंगे पता भी नहीं होगा, और बहुत बार बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, अच्छा ये भी हमारे अंदर था, आपको पता था, या उसको ओके देख भी रहे होंगे, पता भी होगा तो सोच नहीं रहे होंगे, या ध्यान वो नहीं होगा कि इसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, और एक्चुअली वो अभी मैटर करता है। जैसे किसी ने थप्पड़ मारा बचपन में, या किसी ने चिल्ला दिया, तो चिल्लाने से डर गए, पर आज कोई थप्पड़ मारे या चिल्लाते हैं, आज भी थप्पड़ से डर लगता है कि थप्पड़ मारना जैसे बहुत बड़ी बात होती है। पर अगर देखो तो थप्पड़ मारने से बड़ी बात हो रही है, अगर थप्पड़ मारने से कोई थप्पड़ मार रहा है और आपको 5 लाख मिल रहे हैं, तो आपको थप्पड़ इतना मैटर करेगी। हम्म और थप्पड़ मारने दोगे या नहीं, उसके लिए भी वो डर रहेगा, या 100 चीजें हम्म होंगी कि उसको रोकना कैसे है या अवॉइड कैसे करना है। काइंड ऑफ मारने नहीं हम्म देना है तो नहीं देना है, क्यों मारेगा या क्यों चिल्लाएगा, और चिल्लाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें, वो हमको हम पे चिल्ला रहे हैं अपनी इनसिक्योरिटी पे। पर वो चीजें बैठोगे तो देखोगे, एकदम से कोई कुछ भी करेगा तो हमारे पे हम पे इफेक्ट होता है, हम्म कि इसने मेरे साथ ऐसे बात की, इसने मेरे से अच्छे से बात नहीं की, तो भी अच्छा मेरे को वैल्यू नहीं दी, मेरे हम्म फालतू समझ रहा है या नोटिस नहीं किया, जो भी छोटी छोटी चीजों से भी इफेक्ट होते हैं, तो वो हम्म चीजें हमारे अंदर है ऑलरेडी, हम वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। हम्म तो वो है, तो हर चीज हमारे अंदर मेमोरी स्टोर होती है, तो पीछे जाने की, जाना आना चाहिए वो जरूरी नहीं है कि आपको आना चाहिए तो ही जा पाओगे। मेरा रोल हम्म वही है कि बिना जाने नहीं आता हूँ तो भी कैसे लेके जाऊँ, और आप कैसे बताओ।
Thank you so मैं much. बोलता हूँ और सुनता हूँ ना, तो जो आप शब्द बोलोगे, क्योंकि उसमें से ही मेरे को पता चलता है, उससे जैसे ही क्वेश्चन पूछूंगा तो वो डीप में चलते जाओगे। आप हाँ. बोलोगे कि मैं कुछ भी स्टोरी भी बता रहे होगे ना, कि मैं पूछ रहा हूँ, तो आप बोलो पहाड़ों में घूम रही हूँ, ये कर रही हूँ, पानी में स्विम कर रही हूँ, ये जो भी चीजें उसमें से भी मैं जितना बोलती हूँ, जो शब्द बोलते हो, उसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो सीधा उस पॉइंट तक लेके जाएगा। कितना भी घुमा लो, 3 राउंड घुमाओगे, 4 राउंड घुमाओगे, 5वें में उस पॉइंट तक आओगे ही आओगे। वो हर चीज माइंड आपको किसी भी वे में कुछ भी बोलो, लीड आपको वही करेगा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिस चीज को आपको एड्रेस करना है, मतलब ऐसे। तो मेरा जो आर्ट है, मेरी मास्टरी है, जो मेरे को सबसे अलग करता है, वो यही चीज है। और उसी की वजह से अमेजिंग रिजल्ट्स बता रहा था ना, जैसे क्रोनिक डिसीजेस भी, भाई कैंसर भी रिवर्स होता है, किया हुआ है पूरा। आंखों का चश्मा है, सुनने का जैसे 70% 80% भी, मतलब वो बंद, डॉक्टर बोल दिया होता है कि नहीं हो पाएगा, या ऑपरेशन के बाद भी वो भी क्योर हुआ है 100%। किडनी इश्यूज क्योर हुए हैं। कैंसर, थायराइड और डायबिटीज के तो मैक्सिमम क्लाइंट्स है मेरे पास, मैक्सिमम। Thank you, Mike. वो सारी चीजें तो बहुत नॉर्मल। हाँ. इस तरह मेरी स्पेस में खुश हो जाते हैं, मतलब चेंज होना शुरू हो जाता है। हाँ. हाँ पिंकी। So my question was, जैसे हमने bars run किए and सारे clearings करे and all that clearing statement and all. So still we don't go to the point of creation without recalling. जैसे the clearing statement है pod and pop. Okay, so we are without recalling the incident, what happened, what during that time क्या हुआ था, कब ये हुआ था. So just using a pod and pop doesn't it destroy and It, unpick on the point of it creation? clears the emotion that is मतलब coming up on surface. Okay. Even Access says that also, even if you listen to it, clears the moment from the space of, but that particular emotion or that particular layer. But that Okay. causes you, everything is not about that particular layer, only about particular layer. Wow. There are millions of other reasons, other emotions, feelings too with that. Okay. If that had done in that way, so the one, if you had said we don't have to repeat that clearing statement again and again too. But they are saying whenever anything comes, we have to use that clearing statement, and that clears up that emotion with that Okay. layer all that. But that is not the only thing that is creating what is creating or what is showing up in our body. And that's why we in Access we don't guarantee, मतलब basically you don't have to give guarantee, or it is not going to work particularly on that, though it is going to relax you completely, and it is an amazing one. It makes you relax instantly. It works like magic. I love that completely. But they are saying that you don't have to guarantee, and because it is designed in a way that it's not going to clear from the core of it, all the aspects. It is going to clear just that layer, that emotion that is showing up on the top. But it says it clears 5,000 years of Yeah, but only programming. that point, particular point. That's what I'm saying. That is clearing it, but just from the core of it, but that particular point and emotion. But what is triggering us is millions of a group of millions of emotions, Okay. or hundreds or thousands of it. Okay. जैसे बारिश में भीगने से, मैं सही हूँ कि ठंडी बारिश में भीगने से सर्दी हो जाती है, तो वो सिर्फ बारिश से भीगने से सर्दी, मतलब पानी की वजह से सर्दी नहीं हो रही है, उसका इफेक्ट एक कॉमन ट्रेड है जो बहुत ज्यादातर लोग कर पाते हैं। उसके लिए वो एग्जांपल ले रहा हूँ कि सिर्फ पानी से वो नहीं हो रहा है, सर्दी सिर्फ पानी से नहीं लग रही है। उसके साथ देखोगे तो एक पानी का रोल है, दूसरा जिस पर्सन ने बोला है, उसके बाद जब आप भीगे थे उस टाइम पे क्या इमोशंस थे आपके, जो भीग के सर्दी लगी थी या उसको सच बनाया, उस टाइम पे कितने जनों का क्या रिएक्शन था, वो भीगने के बाद जब सर्दी लगी थी तब फैमिली का रिएक्शन कैसे था, फैमिली मेंबर्स का। ओके। उसके बाद वो टाइम क्या था, टाइम ऑफ द डे, वो मौसम, सर्दी थी, गर्मी थी, क्या था। तो वो सारी चीजें जितनी हैं, अगर ये इतनी सी बता रहा हूँ, तो ये जो जो देख पा रहे हैं हम, वो इतनी सारी चीजें हैं।
उसके बाद क्या बेनिफिट हुआ, जो सर्दी कितने दिन चली, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या वो हुए, तो उसको कितना सिग्निफिकेंट हमने बनाया है कि अच्छा उससे ये अटेंशन मिला था, स्कूल से छुट्टी मिली, ओके खाना वो चीजों पे बैठ के मिला, मेरे लिए स्पेशल चीजें बन रही थी जैसे दाल का पानी या कुछ भी होममेड रेमेडीज होती है, पर वो स्पेशली चीजें बनती है तो उसको हम केयर की तरह ले रहे होते हैं, वो चीजें अच्छी लग रही होती है तो उसको उतना सॉलिडिफाई करते जाते हैं। बहुत सिंपल और बहुत छोटी चीज है, पर उसमें भी देखो तो आप मिलियन व्यूज, मतलब इतनी सारी चीजें तो जो हम देख पा रहे हैं या मैं बिना बताए जस्ट एज एग्जाम्पल ले पा रहा हूँ, ओके तो उसके साथ ओके कितनी सारी चीजें जुड़ी होती है, पर जो सरफेस पे आती है उसमें से सिर्फ एक चीज आ रही होती है कि पानी से सर्दी हुई तो वो पानी का इफेक्ट खत्म करेगा, समझो, एक वो भी एक लेयर पे, उस पानी के लाखों मतलब वो होते हैं। पानी बारिश का साफ होता है, ठंडा हो तो ये होता है, गर्म हो तो ये होता है, इस सीजन में हो तो ये होता है, ऑफ सीजन बारिश होती है तो उसके ये इफेक्ट होते हैं, सर्दी में बारिश होती है तो ये इफेक्ट होते हैं, कीचड़ वाला पानी लगता है तो ये, फिर पानी के साथ जो पीने के पानी के साथ तो वो पानी ही है पूरा, उसमें से एक ओके लेयर क्लियर होती है जब क्लियरिंग स्टेटमेंट से बोलते हैं वो कोर तक, पर उसके साथ बाकी जो मिलियंस ऑफ वो है, तो वो तभी बोलते हैं कि हर बार आपको बोलनी है, जब भी होता है तो वो बोलते जाओ तो वो एक एक लेयर, एक एक पॉइंट क्लियर होती जाती है, और जो So सरफेस how will आ the रही है वो निकल के hypnotherapy हाँ, help? So how will the hypnotherapy at we'll what go to level the it is? core of it, to the everything, जैसे ये बताया कि वो बारिश का कहाँ से आ रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या क्या लग रहा है, ये जो एग्जांपल देके बताया ना पूरा, कि फैमिली में हाँ क्या हाँ चल रहा था, आपको क्या क्या बेनिफिट लगे उससे, और वो बेनिफिट्स के लिए आपको अभी भी बीमार होने की जरूरत है, बारिश में वैसा अटेंशन चाहिए है, या ऑलरेडी अब हाँ वो अटेंशन आपको मैटर ही नहीं कर रहा है, तो वो हम ओके रिलीज करना हुआ, जब उस स्टेज तक, उस गहराई तक हर चीज देखोगे ना, तो उसकी हाँ जरूरत हाँ है आपको कि नहीं, जब वो छोड़ोगे तो वो चेंज लाता है, वो ओके छोड़ना हुआ काइंड ऑफ, उसमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, पर जब वो स्टेज में अवेयर होके देखोगे और वैसा अटेंशन चाहिए है कि नहीं आपको उस चीज से, ओके ओके जैसे रिलेशनशिप में है कहीं पे भी, तो वो मतलब वो था क्वेश्चन अंशिता का कि ऐसे, अंशिता का था कि किसका था, सॉरी अगर ना मैं करूँ, मैं किसका था क्वेश्चन, कि वो था अगर वो चीज में हम छोड़ रहे हैं कि इस टाइम पे, मतलब वही पर्सन एक खुश कर सकता है, हमको हैप्पी रख सकता है, पर वो सच हाँ है हाँ तो उस टाइम के लिए सच था, पर अभी के लिए देखो तो हम खुद को भी खुश रख सकते हैं, और बहुत सारे जने ऐसे हैं जो हमारी खुशी से जिनको फर्क पड़ता है, या अच्छे से बहुत ध्यान रख सकते हैं, अच्छे तो पेरेंट्स भी या पार्टनर भी, बहुत सारे जने हैं, खुद भी हम उतने ही कैपेबल हैं कि हम उससे ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकें, पर हमने या उस राइट टाइम पे वो माना हुआ है, तो वो रिएक्शन वहां से ही आ रहा है, उसके साथ जो जो चीजें थी, एज फैक्टर हो जाता है, उस टाइम पे ये था, कॉलेज में फ्रेंड्स क्या क्या शो अप होता है, स्कूल में कॉलेज में जिस भी एज में है, तो वो रिलेशनशिप के साथ क्या क्या एसोसिएशन है, किस तरह से क्या छुपा के कर रहे थे, तो उससे हमको पावर मिल रहा था, सुपीरियर फील कर रहे थे, इम्पोर्टेंट फील कर रहे थे, तो वो सारी चीजें, ओके वो सारी लेयर्स एक एक नहीं है, उसके अंदर जितना जाते जाएंगे, ओके मतलब जो जो भी चीजें, जो जो भी कनेक्शन, ओके वो सारे ऐसे, ओके तो उसके and कोर then तक what जाएंगे। so हाँ, after bringing it to the awareness yeah. you will be using some of the hypnotherapy techniques to This release that. is to go to the core of it, is a way of hypnotherapy only. This is what we are Acha, doing, is okay, kind of a okay, okay, hypnotherapy only. okay, So okay, what okay, fine. hypnotherapy means is to make you 100% present with yourself, with each and every Ah, point of view, okay, everything. okay, Yeah, you can be okay. present with 1 million things at the same time. हाँ. Okay, thank you. No, my pleasure. Hope I have answered your query. Yeah. Okay. And I was sharing to Anshita also, no, or in the call, कि we are going to spoon feed you, kind of spoon feed you, handhold you to the each and every point of view, whatever is coming, all the emotion, handhold you and make you aware of everything. चाहे छोटी से छोटी चीज होगी या बड़ी से बड़ी चीज होगी, किसी के चिल्लाने की वजह से भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसा भी वो होता है। चिल्लाने तो छोड़ो, मैंने एक कैंसर का अगर एग्जांपल ही बताऊं, शेयर करूं एक्सीडेंस, तो एक फ्रेंड की मम्मी को कैंसर था, तो उनका वो था कि वो जिम में जाते थे, और जिम इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि ये नहीं करोगे तो हेल्दी नहीं रहोगे, ये बीमारी होती है एज के साथ, तो उतनी सी वो बात की वजह से उनको कैंसर ट्रिगर हो गया था कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ, बैठी हूँ, तो उससे मेरी हेल्थ तो खराब होनी है।
उसको क्लियरिंग कर लो कहाँ पे भी, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू तो सरफेस पे आना ही नहीं है कि किस चीज से क्या हो रहा है, जब तक जाके उस स्पेस पे पहुंचे। और आ भी सकता है तो वो जब तक पहुंचे उसमें तब क्लियर होगा, तो वो लेयर तक कब पहुंचते हैं। हो सकता है एक सेशन में ही पहुंच जाए, हो सकता है 15 सेशन में ही पहुंच जाए, जैसे एक्सेस बाहर से या किससे भी कर रहे हैं। तो कहीं पे भी कोई भी चीज खराब या गलत नहीं है, कम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब बाहर में वर्क करता है तो 10 चीजें और भी क्लियर होती है, बहुत ईज आता है, लाइफ में कंफर्ट आता है। इवन भी एक्सेस ये सेशंस का जो वैसे बता रहा था ना कि 15 साल से करता हूँ, तो सेशंस के लिए चार्ज करना और ये सेशंस की वैल्यू इतनी है, वैल्यू इन वे कि जो चेंज आया या पैसे ले सकना, वो एक्सेस में आने के बाद किया है मैंने। पहले कोई सामने से पैसे देता था तो भी नहीं लेता था कि नहीं यार ये इसमें तो मैंने किया क्या, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे लिए फन है। मेरे को पूरी रात भी बिठा दोगे 10 घंटे भी अगर सेशंस करता रहूंगा तो मुझे मजा ही आता है और थकान नहीं होती, उल्टा काइंड ऑफ पिकनिक ही होती है मेरे लिए। इतना जॉयफुल, मेरे इतना मजा आता है मेरे को। पर उसके लिए, और मेरे को लगता था कि मेरे लिए इतना फन है, जिस चीज से खुशी मेरे को मिल रही है, सामने वाला क्योर हो रहा है तो भी चेंज जो उसकी लाइफ में आ रहा है, मेरे को खुशी मिल रही है और मेरे लिए तो वो फन है, तो मैं उसके लिए पैसे क्या लूं या क्यों लूं। और ये चीजें तो इतनी सिंपल है कि उनको भी पता है या होगा ही, पर उससे कोई कम नहीं हो रहा है। जो एक्सेस में आने के बाद जो रियलाइज किया, और पैसे भी, एक तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रेजेंस भी काफी होता है बहुत बार चेंज करने के लिए। दूसरा, हम किसी को कम नहीं बना, अगर किसी को ये पता नहीं है, वो चीज किसी के नोटिस में नहीं है, तो वो कम है या वीक है नहीं हुआ, सिर्फ उसकी अवेयरनेस डिफरेंट, उसकी पोटेंसी जो है, मैजिक जो है, पावर जो है, वो डिफरेंट चीजों में है। उनके लिए फन, उनके लिए प्रायोरिटी, हर चीज डिफरेंट है, तो वो कहीं पे भी वीक या गलत नहीं बना रहा है उस चीज को, या अनइंटेलिजेंट है किसी भी वे में, वो नहीं हुआ। मेरे लिए एक इतना सिंपल की वजह से लगता था कि सबको ये तो चीज सबको ही आती होगी और ये सबके लिए सेम ही है, और उसके So लिए कोई where did you learn the hypnotherapy from? I had learned from CHII, California Hypnosis Institute of India. Now it is shifted to ECA, मतलब Okay, Eka is the ECA field. Foundation. Yeah. Okay, I had okay, done it around 2008-9. Started. okay. And integrated with Access is like magic. Though there were so many limitations in hypnotherapy also as per the course, but as with the experiences I'm getting and after integrating with Access, as I told कि I love Access, I am not saying कि Access doesn't work या वो जितना Access की वजह से चेंज आया है वो तो कोई मतलब उसके साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जब बास का पूछ रहे थे या मैं बोला था तो कहीं पे भी एक्सेस को कम कर रहा था या वो नहीं, या वर्क नहीं करता है, उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पे भी नहीं था मेरा बोलने का। उल्टा उसने और दिखा रहा है और ग्लोरीफाई किया है मेरी प्रैक्टिसेस को, पैसे लेने को, लाइफ को, हर चीज को, देखने के नजरिए को, लोगों को समझने के वे में, चीजों में। क्योंकि पहले वही लिमिटेशन होती थी कि जब तक लोग पीछे नहीं जा पाएंगे, मैं अगर हिप्नोथेरेपी करा रहा हूँ तो वो ट्रांस में जाने चाहिए, अगर बीच में उनकी आंखें खुल गई तो वो सेशन खत्म हो गया, सेशन तो फेल हो गया, अब उसको वो नहीं करा सकते हैं। कोई सामने वाला पर्सन रेडी नहीं है, जाना नहीं चाहता है तो उसको लेके नहीं जा सकते हैं। रेडी नहीं है ना लेके, भाई अगर उसको डर है मन में तो कभी भी, जब तक उसका डर नहीं निकलेगा तब तक तो हम पीछे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो आंखें बंद कर नहीं रहा है, ट्रांस में जा नहीं रहा है, तो मैं उसको आगे कुछ लीड ही नहीं कर पाऊंगा। वो सारी चीजें जब एक्सेस के साथ इंटीग्रेट करके करता हूँ तो वो कहाँ से किस चीज को कैसे लेके आना है। ये फाउंडेशन भी अगर मैंने एक्सेस में बोलो तो कम से कम 15 बार बार्स क्लास जो फैसिलिटेट भी अभी तो करता हूँ, पर पहले उससे 15 बार के अराउंड बार्स क्लास की होगी और 20 से 25 बार से ज्यादा मतलब फाउंडेशन क्लास रिपीट की हुई है। टॉक टू एंटिटीज 10 से 12 बार या उससे भी शायद ज्यादा ही की हुई है। तो एक्सेस भी उतना ही प्यारा है, उतना ही नस नस में वो भी है ही एक्सेस। तो कहीं पे भी कम होता तो मैं इतनी बार करता नहीं, या एक्सेस वर्क नहीं कर रहा होता तो मैं इतनी बार वो नहीं कर रहा होता। और बुक्स भी, जितनी भी बुक्स आती है 99% अगर बोलूँ तो सारी बुक्स हैं भी और पढ़ी हुई भी है, एक एक शब्द डिटेलिंग में, और फैसिलिटेशन भी ली हुई है एक्सेस उतने। तो एक्सेस उतना ही पावरफुल है, पर जो रूट कॉज तक जाना, जो चीज हमको इफेक्ट कर रही है, अगर हमको वो उसके कोर तक जाना है, पर्टिकुलर किसी एरिया में अगर जा रहे हैं,
जैसे वेट है, डिसीज है, पेन है, किसी के भी कोर तक जाके उसको रिलीज करना है, तो वो चीजें इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो वो 100% तभी मैं इतना कॉन्फिडेंटली और गारंटी दे पाता हूँ कि 100% मनी बैक गारंटी भी देता हूँ, रिजल्ट भी आएगी ही आएगी। और किसी का कुछ क्वेश्चन? और कॉल्स के लिए अगर सॉरी कोई किसी का अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज, तो तब तक डिटेल्स बता दूं मैं कि क्या क्या करने वाले हैं। एक तो इसी वे में फैसिलिटेशन होगा, एक पर्सन एट अ टाइम रहेगा, 2 ग्रुप सेटिंग ग्रुप होगा, पर एक ही पर्सन को एज अ हॉट सीट बाई एक पर्सन को एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको उसके अंदर वो चीजें क्या क्या शो अप हो रही है, क्योंकि सेम चीजें सेम सिचुएशन में पेन हो, वेट हो या कोई भी हो, हर किसी का रीजन, हर किसी के इमोशंस, एसोसिएशन सब कुछ अलग हो सकते हैं। तो एक पर्सन को एक टाइम पे करेंगे और बाकी सारे इमोशंस जैसे जिसके भी आ रहे हैं तो वो अपने पास नोट कर ले या चैट में डाल दे, तो जैसे ही उसका खत्म होगा तो फिर दूसरे पर्सन को एक एक करके उनके सारे एडजस्ट करेंगे। वो उसी वे में रहेगा। फॉर्मेट टाइमिंग रहेगा, टाइम ऑफिशियल टाइम 2 घंटे रखा है, पर 2 से 3 घंटे भी खिंचता है, 4 घंटे भी खिंचता है और 1.5 घंटा भी। तो वो जैसे एनर्जी रहेगी, जैसे रिक्वायर्ड होगा वैसे, कहीं पे भी वो जल्दी नहीं होगी कि अभी खत्म करना है, या एक कभी किसी को जल्दी जाना है तो वो लीव कर सकता है आराम से। सिर्फ जो सेंटर में होंगे दो एक दो जने तो वो रह रहे हैं, तो भी बाकी रिकॉर्डिंग के थ्रू भी, और मेन प्रायोरिटी उनको रहेगा। बाकी रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे तो चलेगा, और क्वेश्चंस कभी भी हैं तो ग्रुप में किसी टाइम पे भी रह सकते हैं, मतलब ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स रिप्लाई उसी टाइम मिल जाएगा, या जैसे फ्री होके मतलब 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे जब भी फ्री हुआ तो रिस्पॉन्स उसका वो मिल जाएगा। दूसरे कॉल में एड्रेस उसको डीप तक, अगर कुछ ऐसा होगा कि कॉल मतलब सामने ही एड्रेस करना होगा, उसमें मेरे को 5-10 क्वेश्चन और भी होंगे, तो वो फिर नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे, वैसे रहेगा। और कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा तो ग्रुप कॉल की जगह कहीं पे 15 मिनट आधा घंटा पर्सनल कॉल पे भी वो ले सकता हूँ, मतलब लेने की जरूरत होगी तो वैसे भी कर सकते हैं, कि कोई वो कंडीशन नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही या वही होगा। तो वो मतलब ये सारी चीजें रहेगी उसमें। दूसरा रिकमेंडेड मतलब जो है 3 मंथ्स का है, पर इस बार मंथली ऑप्शन भी रखा है, लास्ट टाइम भी रखा था। रिकमेंडेड ऐसे है कि 3 महीने ही कंटिन्यू करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, और 100% जो चाहिए वो मिलेगा ही। जबकि पहले 1-2 सेशंस के बाद भी रिजल्ट्स तो दिखना शुरू हो ही हो जाएंगे। और मंथली प्लान्स भी है और 3 मंथ का भी है। उसमें मंथली प्लान है 9,000 रुपीज अगर मंथली भरते हैं तो, और 3 मंथ का 25,000 है। ठीक है ना, कॉल्स वीकली 2 रहेंगे, टोटल 24 कॉल होंगे 3 मंथ के अराउंड, मंथ में 8 कॉल। और टाइम अभी के लिए रखा था 7, पर जो जो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग जैसे भी कन्वीनियंट होगा 5-6 या डेज वो वर्कआउट फिगर आउट कर सकते हैं सबके उसके हिसाब से, जैसे सूटेबल होगा। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो जो यहाँ पे लाइव है या रिकॉर्डिंग सुन रहा है कि सुनेगा, सुन के तो भी वो पिंक कर सकते हैं, और कहीं पे भी कभी भी ज्वाइन काइंड ऑफ मतलब अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, जो भी अगर कोई करना चाहे तो भी, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर फोर्स नहीं होगा कि इस दिन पे पहला कॉल मिस कर दिया तो वो सीरीज वापस आई, वो चीजें मिस हो जाएगी। वो हर फॉर्मेट हर दिन नया दिन ही होगा, काइंड ऑफ वैसे ही रहेगा कि जहाँ से भी कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजें आएंगी वो एड्रेस, और बाकी जो भी ज्वाइन करता है तो उसको रिकॉर्डिंग्स भी पहले की 1-2 कॉल्स अगर हुए हैं तो मिल सकती है, मिल जाएगी। और दूसरा किसी को पर्सनल सेशंस लेने हो तो 30,000 मंथली, उसमें 8 सेशंस होते हैं, उसके 30,000। अर्ली बर्ड उसमें पहले था जो खत्म हो चुका है ऑलरेडी, पहले 3 कॉल्स गिफ्ट कॉल्स किए थे, जिसमें पहले प्राइस की कॉल्स की 21,000 अर्ली बर्ड ऑफर रखा था 3 मंथ का, और पर्सनल सेशंस का 25, अभी 30,000। किसी को भी ज्वाइन करना हो तो मोस्ट वेलकम। कोई रेफरेंसेस हो किसी को शेयर करना चाहे तो प्लीज। थैंक यू। अगर और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज। थैंक यू। सोनाली कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना था तो भी प्लीज।
मतलब मोस्ट वेलकम अगर कुछ करना चाहो तो। या हेलो, मेरा क्वेश्चन है, आपने क्या सबको कैमरा ऑफ रखने के लिए मैंडेटरी बोला है क्या? एंड आई जॉइन, आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है, नोबडी इज ऑन द कैमरा, उमेश टॉकिंग, क्या हो रहा है? वो देख रहे थे सबके बिना कैमरा के भी पता चलता है रीड हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाता है कि नहीं। हेलो मेमा, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन द कैमरा, थैंक यू सोनाली कैमरा चालू करवाने के लिए। Yeah, so I am taking personal sessions with Umesh, and there are so many things I have got present to. Uh, like Umesh said, there are so many things which we are not even aware of. It could be very silly thing which someone has said, and we have made it so significant, and it is creating a totally different reality for us. So we start operating from that reality. Friends So बढ़ा दी ग्रुप का yeah, go ahead, mute it. so yeah, that is what has been showing up for me. And मुझे तो मतलब एक बार ऐसे like the way Umesh does it, like simply बातें करके इतने कोर तक जा सकते हैं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता। But the way things are happening for me, it really feels magical. So the Mesh gives, like उसका कोई form and structure नहीं है कि 1 घंटा बोला तो 1 घंटा. He can be with you throughout the day. It is amazing how he is present. जब तक आप थक नहीं जाओगे, बोलोगे भाई अभी बस करो, उमेश छोड़ेगा नहीं. that is the gift Umesh is. So it's amazing. So there has been a lot of resolve for me. अभी तक वेट कम नहीं हुआ है, बट वो उमेश बोलता है कि वो करवा के ही छोड़ेगा, तो आई हैव जस्ट लेफ्ट इट ऑन हिम. बट इट इज अ लॉट ऑफ फन. इट इज रियली अ लॉट ऑफ फन. मतलब एक स्ट्रेस फ्री जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वो उमेश. एंड द वे ही इज प्रेजेंट, आई थिंक even if we get someone who can listen to us with this kind of presence, that's a different kind of healing in itself. That is what it is for me. So it is amazing. I would recommend everyone to take personal sessions, though I would love to have the benefit of group session. Yeah. Thank you so much. God bless you. Thank you so much, and my pleasure. Thank you, Vinita. Thank you, Vinita. Vinita saying yes, that's true. Wish is very helpful, and thank you, Vinita, to you. And thank you all for joining. Hope to see you on the call, joining us in the group of sessions too, or anyway in the free calls, for the gift calls too, whatever. Thank you so much, everyone. Bye bye. Bye, Mema, Anchita, Sanya, Jigna, Vinita. Bye. Thank you. Same to you. Bye. Bye bye. Thank you, Dr. BC.